It was great to have a podcast with you earlier, but it's now more good to see you back on our channel. Tell me, sir, how it's going nowadays? Good. Life is good, and as you're aware, that I retired about 3 years back from the army, and since then, life has been different. But I must say, good. New experiences every day, and mostly I've been involved in social work. Okay. I was the president of my Residents Welfare Association here, Okay. so we did many things in that. I'm also doing a little bit of professional work in the sense that I have a blog site. I write articles, and I also write articles for some newspapers and magazine journals. Not much of a difference, I'll say. Right. After my retirement, I keep myself busy, Right. and yes, I'm quite happy, enjoying myself. Yeah. गुड टू हियर दैट सर। एंड एक चीज़ होती है ना कि पहले आपको बिजी रखने के लिए चीज़ें होती थी आपके पास, हम्म। अब आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ती है बिजी रखने के लिए। हम्म। व्हाट डू यू थिंक उसका डिफरेंस क्या आ गया अब लाइफ में? I'll tell you. एक्चुअली क्या है कि आई गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू रूटीन, हम्म। जिसको हिंदी में नियम बोलते हैं. जी सर। So in fact, I'll quote Mark Murdoch. He's author, speaker, and a leader from America. So he says that when the secret of your future lies in your routine. So same as I follow a little bit of yoga and spirituality. Okay. So Patanjali says that niyam is a very important step of his eightfold part to yoga. नियम जिसमें कि आपको अपना जो एक रूटीन काम है वो ज़रूर आपको सही तरीके से फॉलो करना चाहिए. तो आफ्टर माई रिटायरमेंट आई मेड श्योर दैट आई फॉलो गुड रूटीन. Because of that, I have, I'll say, something called the sense of purpose, Okay. or what Japanese call ikigai. Yeah. So, so I give a lot of importance to routine, follow it, and because of that, I remain happy, Yes. I remain healthy, and I remain purposeful. ओके, सो अगर मैं इमेजिन करूं, अगर इफ आई वुड, मैं एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखूं गजेंद्र सिंह की लाइफ, तो कैसे दिन स्टार्ट होता है, क्या क्या करते हो आप दिन में, और शाम कैसे ढलती है आपकी? पहली बात तो मेरा दिन, मतलब मेरे पास में टाइम की कमी पड़ जाती है. अच्छा। आई एम सो बिजी, ओके। and despite the fact that I am so organized, मेरे पास टाइम की कमी पड़ जाती है. तो रूटीन कुछ ऐसा बन गया है. सो इस पे भी क्या है कि आई स्पोक अबाउट सेंस ऑफ पर्पस. ओके। तो सेंस ऑफ पर्पस में क्या है कि मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो सेंस ऑफ पर्पस है, जो मैंने अपने लिए डिफाइन किया है, वो है टू लीड ए हैप्पी एंड ए मीनिंगफुल लाइफ. ओके। So meaningful means where you can help others, where you can do something for the society. So happy and meaningful life lead करने के लिए I believe that there is something called wheel of happiness, व्हील ऑफ हैप्पीनेस। or also I call it six pillars of life. जी। तो सिक्स पिलर्स में जो मेरी अपनी जो सीक्वेंस है अभी पिलर्स की, तो सबसे पहले मैं मानता हूँ कि मेरे को इस स्टेज में लाइफ में, व्हेन आई एम 62 years old, रिटायर्ड जनरल फ्रॉम द आर्मी, तो सबसे पहले मैं अपने को स्पिरिचुअलिटी के पिलर में फोकस करता हूँ. दूसरा है मैं अपनी हेल्थ पे फोकस करता हूँ. अच्छा। एंड आई स्टिल फोकस ऑन माई प्रोफेशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. देयर आफ्टर आई फोकस ऑन माई responsibilities towards the society, nature, and environment. राइट। I focus towards my family. And lastly, I focus towards my financial health and well-being because I'm all right. तो अगर मैंने ये पूरे सिक्स पिलर्स को, अगर मैंने इन पे फोकस करना है दिन में, तो आई पे अटेंशन टुवर्ड्स ईच वन ऑफ देम सिंस मॉर्निंग. मैं सुबह नॉर्मली क्या है कि 4:30 या 4:45 के करीब उठता हूँ. तो उठते ही मैं जब बिस्तर पे लेटा हुआ होता हूँ, तो आई डू समथिंग कॉल्ड अफर्मेशंस. ओके। मेनी पीपल डू इट, अफर्मेशंस. तो अफर्मेशंस में मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि आई एम एम्पावर्ड, ओके। आई एम एम्पावर्ड टू हेल्प अदर्स, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, एंड आई एम बैलेंस्ड.
These 4 affirmations I do repeatedly. Okay. And then later ही मैं 10 या 11 बार ओम नमः शिवाय बोलता हूँ, उसके बाद उठता हूँ. Quickly I do certain, I think almost every person of my age does that. कोई मेथी दाना खाता है, कोई कुछ करता है, तो I also do my own, you know, those health tricks. And after doing that, I take a bath. Okay. And I do about 45 minutes of sadhana session. Okay. I do meditation. And उसको करने के बाद में then I quickly change into my walking dress. Okay. And I go down for a walk, and we are large number of friends who walk together in the society. Right. तो उसमें क्या है कि हम लोग कई बार 5 लोग शुरू होते हैं, फिर 8, 10, 15 लोग हम लोग वॉक करते हैं, इकट्ठे गप्पे मारते हैं. 1 घंटा वॉक करने के बाद में आई कम बैक. और वापस आने के बाद में सबसे पहली चीज़ तो मैं ये करता हूँ कि मैं अपना आके स्ट्रेचिंग करता हूँ और अपनी कुछ एक्सरसाइजेस करता हूँ. आई डू प्लैंक्स. Okay. I do sit-ups. I do about 80 to 100 sit-ups, and then I do dumbbells. Wow. So ये सब मेरा करते करते 8:30 पौने 9 बज जाते हैं. जी. Then I do 15-20 minutes of reading. Okay. But that is spiritual reading. 15-20 अच्छा. minutes. Then I take a bath and have my breakfast. और breakfast के बाद then is my other things. I spend about one, if it's a working day, I spend 1 hour to 2 hours on the stock markets. I look at the shares, I look at, and I do my other things. कोई income tax का काम है, कोई किसी के पैसे देने हैं, bills clear करने हैं, such like things I do. And then if I have something to do outside, some other commitment, and then I go out. I normally give timing to people like this only. Right. For a meeting between 11 to 1. So I do that. Or if there is no commitment like that, then I do my professional study. I will read, or I'll write an article, I'll do something like that. Right. उसके बाद में अपना लंच टाइम होता है. लंच से पहले I have a heavy bowl of green salad. Okay. And I have very light lunch. And at least thrice in a week I go for golf. So after lunch मैं 2 बजे निकल जाता हूँ golf के लिए. And I'm back by about 6 in the evening. Right. 6 बजे शाम को वापस आने के बाद फटाफट चेंज करके I do my half an hour, 45 minutes of meditation. Okay. Have early dinner, do some professional work, go to sleep. Thrice in a week, I have party days also. Okay, wow. So it is not that only work and no play. So I have 3 days. If someone wants to, like I want to invite someone, I invite people only on those 3 days. Okay. Or if you want to invite me for dinner, you can invite me only on those 3 days. Got it. Wednesday, Friday and Saturday. Okay. So these 3 days we have kind of a for social outings and things like that. So what I do is कि मैंने अपना पूरा दिन जो है इसको ऐसे डिवाइड किया है कि जो मेरे 6 पिलर्स हैं लाइफ के, स्पिरिचुअलिटी से लेके, हेल्थ से लेके, फाइनेंशियल वेलबींग से लेके, सोसाइटी की जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मानता हूँ, उन सब के ऊपर में मेरा थोड़ा फोकस रहे. तो इस प्रकार से मेरा डे जो है वो निकलता है. नहीं सर, बड़ा अच्छा दिन जाता है आपका. और मैं तो कहूँगा कि एक ऐसी रिटायर्ड लाइफ या फिर एक ऐसी डिसिप्लिन लाइफ हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में हो. लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या कर पाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है. बट क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ द, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ आर्मी, एंड आई गेस अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आउट ऑफ आर्मी एज अ पर्सन आपको डिफरेंट बनाती हैं. तो दैट इज समथिंग वी ऑल ड्रीम ऑफ, और जो आप एक्चुअली अचीव कर रहे हो. मेरे 2 सवाल हैं. पहले तो मैं सवाल इससे ही जुड़ा हुआ पूछूंगा कि आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत जुड़े हुए हो. व्हाट डू यू थिंक कि किसी उम्र में स्पिरिचुअलिटी का असर पड़ता है, फिर हर उम्र में एक कहते हैं मेंटल वेलबींग के लिए या फिर अपनी रूट से जुड़े रहने के लिए इंसान को स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी चाहिए? मेरा ये ओपिनियन है कि अगर मैं स्पिरिचुअलिटी आपकी एज में करता तो आई वुड हैव बीन ए मच बेटर पर्सन. ओके. तो मैंने लेट स्टार्ट किया, सो दैट इज माय रिग्रेट. एंड हाउ डू यू थिंक यू हैव बीन अ बेटर पर्सन? I would have been better person in many ways. I would have been more tolerant. I would have been more empathetic. I would have been more respectful. In all ways, I think I would have been a better person अगर मैंने spirituality को आज से 30 साल पहले अपनी लाइफ में imbibe किया होता जैसे आज कर रहा हूँ मैं. मैंने बिल्कुल egoistic नहीं होना था. तो वो सब चीज़ें मेरी तो सबको एडवाइस है, यंग लोगों को, आप जैसे यंग लोगों को,
कि आप लाइफ में जरूर सक्सीड करें, अपने आपके 100% में से चाहे आप 10% ही स्पिरिचुअलिटी को दें, मगर जरूर दें स्टेज ऑफ लाइफ में. ओके, इट विल हेल्प यू इन सक्सीड in your life and remain happy also. थैंक यू फॉर द एडवाइस. ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी को तो सब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, बट आपने बताया तो अब और करूँगा. एक बार बार चीज़ आप डिस्कस कर रहे थे, हैप्पीनेस, आपको हैप्पी रखती हैं चीज़ें जो भी, तो मैं जानना चाहूँगा ऐसी कौन सी छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो आपको खुश रखती हैं लाइफ में, डे टू डे मोटिवेट करती हैं नई नई चीज़ें करने को, और आपके वेडनेसडे और बाकी के प्लान जो 3 दिन आपने बताए, उस दिन ऐसा क्या आपकी लाइफ में क्या क्या आप रखते हो? Actually, as I said earlier, ikigai is very important. Some sort of purpose, ultimately रात को जब आप सोते हो तो आप में सुबह के लिए आपके उसमें वो होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, कुछ जोश होना चाहिए, कल मैंने ये करना है. तो जैसे कि मेरे को कई चीज़ें बहुत एक्साइट करती हैं. वन ऑफ देम इज टू this my fondness for now writing, and so writing blogs and such like things. So I'm always excited about writing things about people, about my experiences. That really excites me. More mundane things, if you talk about, then I think walking with my friends is one thing which I really look forward to. कि जो हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप है और हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि सुबह हम कोई पॉलिटिक्स, रिलीजन कि इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे. हम विल जस्ट स्पीक नथिंग विच इज मंडेन, विच इज ह्यूमर, कोई जोक किसी ने सुनाना हो कर सकता. आई लुक फॉरवर्ड टू माय वॉक्स, आई लुक फॉरवर्ड टू माय राउंड्स ऑफ गोल्फ, and of course I look forward to good talks with people like you. I'm also fond of reading. I read books. So that also, अगर कोई अच्छी बुक अगर आ जाए तो उसको then I want to finish it as soon as possible. That also makes me happy. वैसे मैं खुद आजकल जो पढ़ रहा हूँ, मैं तो I am reading a book which I recommend to all actually elderly people of my age, even young people, if they'll read it, there's no harm. I'm reading a book called Yoga Vishishta Sar. Yoga Vishishta Sar. Yeah, it is a beautiful book on Vedanta. Lord Rama, when he had a little confusion in his life, what is this life all about? So he went to his guru, ऋषि देव वशिष्ठ जी. तो उन्होंने उनको राम भगवान का जो सारी शंकाएं दूर की. तो ये इस बुक में उसका निचोड़ है. तो आजकल मैं वो पढ़ रहा हूँ. How do you think, sir, आपकी लाइफ जैसे है, everybody has their own personal choices, you choose this life and you follow this routine, maybe particularly not in your family, everybody does. So how do you think, do you gel up with everyone, or do you ask someone to follow the same routine maybe in your family? No, I don't do that. Okay. I have realized one thing in my life, that it is my duty to only change myself. It is not my duty to change others or expect others to do what I do. तो मैं बिल्कुल भी किसी को नहीं बोलता हूँ अपनी फैमिली में कि आप वो करिए जो मैं करता हूँ. ये मेरा, या किसी और को भी नहीं बोलता हूँ मैं, या वो करिए कि जो मैं करता हूँ, मेरा लाइफस्टाइल बेटर है आपका. क्योंकि मैं भी थोड़े दिन पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो पढ़ रहा था. आई रेड वन न्यूज़पेपर आर्टिकल विच सेड कि जो लोग लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, उनका दिमाग ज्यादा तेज चलता है. सो देन आई कांट टेल अदर्स कि भाई यू गो टू स्लीप अर्ली बिकॉज़ इफ आई स्लीप अर्ली. सो व्हाट सूट्स यू डू दैट. If you can maintain balance in life, ultimately the key is to have balance in your life, and do what suits you, but make sure that you are following the basic principles of life. नियम फॉलो कर रहे हैं आप. नियम से पहले महर्षि पतंजलि ने यम के बारे में बात किया कि आप बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ को फॉलो करिए. अगर वो आप वो कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई हैव नो इश्यूज विद एनीवन ऑन दैट. So I see a lot of pictures and things on your wall. What are those things? What is that particularly? And you see, this particular bust is of a Veer Chakra winner from my unit, 6 Garhwal Rifles. His name is Rifleman Makar Singh Negi. So he got a
Veer Chakra. So his bust was made. Mhm. So I commanded this unit. So Oh, while I was being, when I was being dined out from the unit, I was posted out. right. So this bust was given to me as a Mm, for remembrance purposes. right. And what else? There are not many things. Actually, I have not displayed them. In army, there is a lot of emphasis on mementos and such like things, Right. which relates to our regimental pride, Mm. pride of our units, history of war and things like that. So that is how it is. एंड उनमें से कौन सा ऐसा मोमेंट है जो आपको सबसे वैल्यूएबल लगता है और अपने सबसे करीब रखते हैं आप? आई एम फ्रॉम गढ़वाल राइफल्स. तो गढ़वाल राइफल्स में क्या है कि वी हैव a memento. Shall I bring it? It is there. Sure, If you sure, want, I sir. can bring it also. हाँ. Okay. So this is, you know, my regiment, Garhwal Rifles center is at Lansdowne. Okay. So this is our regimental memento, and this particular bust was actually after the First World War, was established by the Britishers in Lansdowne, Kent. Okay. It is one of the most beautiful pieces. Hmm. If I recall correctly, when Prime Minister Modi had gone to France, he had carried this particular memento as a gift for their president. Oh, wow. And if I recall correctly, because my regiment had fought so bravely during the war, First Right. World War, French had actually allowed only our regiment in the entire history of the world to actually erect a war memorial there. And the money for this particular memento was also given by them. It is considered one of the most beautiful mementos of the Right. Indian Army. I can. So I'm very proud of it. नहीं, I can clearly see that. Sir. Can I touch it if you want? Yeah, of course, you can have it. Looks heavy. It looks heavy. No, it's not very heavy, but yeah, it's beautiful. It's very beautiful, sir. Thank you so much for Yeah. showing me this. It means a lot. So it can remain here. There's no problem. Sure, sure, sure. It will be here, sir. It's gonna be one of my thumbnails for this Yeah. video, sir. Does it represent your army? Yes. Also, you know, people say Mhm. that it is Rifleman Gabbar Singh, Gajinder Singh. who was a Victoria Cross. Okay. It is his bust, but that one, I'm not very sure whether that is true. Mhm. If my regimental officers will see this podcast, they will say that I'm not keeping track of the history. But then this question was just, came up. So Right. I think it is he Mhm. that who stands in this memento. There are many things about our regiment which are actually unique. So in the First World War, we had 3 battalions. Okay. So and all of them actually fought in France with the Germans, and they happened to be the most decorated for gallantry during First World War. And when they came back from First World, so this war memorial was one of them, which was there. Then, in addition, we were given a lanyard, Okay. a red-colored Yeah. lanyard, which is also called Royal Rassi. Hmm. And we were given the title Royal. Right. So we were known as Royal Garhwal Rifles. Oh, yeah. So there are not many regiments in the Indian Army who were known as the Royal Regiments. So we were one of the very few Royal Regiments in the Indian Army. That is what it is. Nice, I can clearly see, and there's a lot to learn from army, and the history of every regiment, as you mentioned earlier, also is very deep, and everybody is proud to say that I'm from this regiment. Yes, yes. And आपने बताया था इन सब चीजों को लेके काफी Yes, we आपस can. में Yeah, we can have. Someone can say that no, my regiment is fought more bravely than yours. But more or less, this is established military history right. that Garhwal Rifles fought very bravely, and French had a deep respect for our regiment, and the Britishers also. Got it, sir. Nice, sir. Thank you so much, sir, for presenting me this. And whatever we got to know you as a person from your daily life routine. And there's a lot to learn from you. Obviously, every time I talk to you, कुछ ना कुछ एक ऐसी अलग सी चीज़ होती है जो हमेशा मैं अपने साथ लेके जाता हूँ एज अ पर्सन भी, वीडियो के थ्रू भी, और ऑडियंसेस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैं वो चाहे मेरे दोस्त हो
यू नो लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ और फिटनेस, हैप्पी लाइफ रूटीन्स के बारे में एक ये वीडियो रहेगा जिसको मैं बार बार प्ले करके देखना चाहूंगा कि कभी अगर मैं लाइफ में डाउन गया तो। बट थैंक यू सो मच सर फॉर Thank सिटिंग दिस you. पॉडकास्ट विद मी। Nice meeting you. Thank you so थैंक much. यू। Thank you.